Just a minute. Give a moment. Yes, good evening, everybody. Good evening. Good evening. You can hear my voice loud and clear. Everybody, just type yes in the chat box. If you can hear my sound loud and clear, just type yes in the chat box. Everybody, just type yes in the chat box. Thank you, Aniruddha. Thank you, Prasanna ji. Thank you, thank you, thank you so much for being here. Thank you so much for being here. एज यूजुअल आज आप कुछ बहुत अलग कुछ कर सकते थे, लेकिन आज एक स्पेशल खास सेशन के लिए हम लोग मिल रहे हैं, विच इज मास्टरमाइंड, राइट? Mastermind. So let's not waste time. Let's come down directly, jump into the mastermind. Mastermind is very close to my heart because I'll share this book with you. This book I read long back. I repeat this. One second, I'll just show you this, and then again go into. Okay, I read this book very long back, and this book has been instrumental in my life, which is which has taken my life to a next level. Every time I read this book, every time I go through this book, Think and Grow Rich has completely mind blown. Every sentence I read from this, every time I get a different perspective altogether. That is why I always say, right, it's all about your psychology of money and success, which is financial fitness. जो भी आपने आज तक पैसे के बारे में सीखा है, समझा है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, एग्जैक्टली उसी एक्सपीरियंस के बलबूते के ऊपर आप आपके लाइफ में निर्णय लेते हो. And this is what exactly this book has taught me. So every time when I do a mistake, every time when I try to analyze my life, I always learn something extra. I always learn something extra. Napoleon Hill is a writer of this book. Aniruddha Joshi. This is a world famous book. और जैसे मैं रिच डैड पुअर डैड की बात करता हूं, वैसे ये किताब भी आपके पास बहुत होना जरूरी है, राइट? ओके, एनी विच वेज, आज ये किताब तो 13 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स है इस मास्टरमाइंड कॉपी में, राइट? बट आज हम लोग बात करने वाले हैं मास्टरमाइंड के ऊपर. मास्टरमाइंड. सो क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स, आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय मास्टरमाइंड? आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय मास्टरमाइंड? देखो, दो टाइप के मास्टरमाइंड होते हैं, लाइक ये सब चीज का सूत्रधार कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, राइट? कुछ काल्पिट होता है, मान लीजिए ये जो भी अभी हम लोग पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, राइट? मास्टरमाइंड, वो एक मास्टरमाइंड होता है. एंड देन community of people coming together is also mastermind. I repeat, community of people coming together is also mastermind. Mastermind is very important because this book says if you don't have a mastermind, then you actually are working in a very tangent way, right? Thinking differently. Thank you. Perfect news, whether in a business. Yeah, thank you so much. So one thing I would like to make it very clear in the beginning of this session is when we talk about mastermind is not just for business people. I repeat, mastermind is not just for business people. आपको जो भी सीखना है, समझना है, आपको एक स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है, अगर मान लीजिए आपको हेल्थ के ऊपर काम करना है, या फिर आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, जॉब में एक्सेल करना है, तरक्की करना है, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, masterminding plays a very important role in our life. Let me give you my example. Last 1 year, we're struggling with the Facebook advertisement, we're struggling with lead conversions, getting good quality of leads. So I was consistently masterminding with various people who have achieved that particular level, और वहां पे मैं हमेशा mastermind करने का प्रयास कर रहा था कि यार लाइफ में क्या हो रहा है, what is happening, why I'm not able to achieve that particular result, right? So when we talk about that, when we talk about that, why I'm not able to achieve that particular result, I used to come down, yo, this is a problem, oh, this is a problem. So where do I learn from this? So I just directly used to call a person who's expert in that, and then try to be along with him. Make sure कि we associate with each other. Make sure we become an accountable partner with each other. और वो जब मुझे कुछ चाहिए तो वो मैं उनके पास जाके पूछ के लेता था. We have community होती है. We have a group of people, and that group of people always interact with each other in a positive way. 2014 में there was a very
नेगेटिव इंसिडेंट हैपन, मुझे तो ये नॉन एग्रीकल्चर उसमें कुछ समझता नहीं था, राइट, लेकिन समथिंग हैपन एंड पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। ना वन थिंग आई रियलाइज दैट कि यार मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, ये करना तो जरूरी है, आई डोंट हैव अ चॉइस। So I surrender to somebody. I make sure कि he is in my loop, he is in my community. जैसे जैसे मुझे वो सीखना है, समझना है, I used to ask questions to him, and then the masterminding happened, and I got my success. And now I'm very much comfortable in that non-agricultural land development and everything. So one thing we need to understand here it very very clearly is, my dear friends, nobody is expert in everything. हर एक आदमी का कोई एक्सपर्टीज होता है, और वो जो एक्सपर्टीज होता है, वो एक्सपर्टीज क्या है, वो अगर हमको समझना है तो फर्स्ट हमको ये समझना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। देन वहां से ये मास्टरमाइंड बनने का पूरा क्लैरिटी आ जाता है। ये बुक कहता है कि इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं ना, एवरीबडी इन दिस अर्थ आर मेकिंग श्योर वेरी 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 क्लियरली इज मास्टरमाइंड is very 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 key for every successful business, every successful person के लिए, every successful sports person के लिए, every successful family के लिए, every successful चीजों के लिए there is a mastermind. मास्टरमाइंड हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हर दिन डेली डे आउट हम लोग मास्टरमाइंडिंग करते हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो हम हमारे बुजुर्ग लोगों को पूछते हैं, राइट, हम हमारे बुजुर्ग लोगों को पूछते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, क्या सोच, क्या व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट, मींस दैट वी आर मास्टरमाइंडिंग। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड एज मास्टरमाइंड, राइट। हम हर वक्त हमेशा उसके बारे में काम करते रहते हैं, बट वी डोंट नो दैट वी आर डूइंग दैट मास्टरमाइंडिंग। Like for example, in school, if you don't have a problem, if you're not able to solve the problem, और आपका अगर mathematics weak है, तो what you do is you go and talk to a person who is expert into that particular expert into that mathematics, right? अगर इंटीग्रेशन नहीं समझता तो जो आदमी इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट है उसको जाके हम लोग सीखते हैं। So it's very commonly used कि masterminding is a group of people who will help you to focus your energy and help you to succeed with your efforts, with their knowledge or any form of knowledge or resources or spiritual energy or whatever it is. This is called as mastermind. Mastermind, we always hear, right? Birds of same feather flock together. राइट, अगर मान लीजिए आपने मास्टरमाइंड करने की इच्छा कर ली, तो जो भी आपको आपके लिए यूजफुल आदमी है वो आपके पास आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, बिकॉज वो एक आदमी है आपके जो एफर्ट्स को बूस्ट देगा उसके नॉलेज से, उसकी स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस से और उसके रिसोर्सेस से। So how many of you are very clear on what masterminding is all about? Just type clear in the chat box. Just type clear in the chat box. Just type clear in the chat box, everybody. Well, this concept is very very common, but not commonly used. Why? Just ask me a question. Why? It's very common, right? Every day in day out we normally use this. But it's not very common. Not very common. It's very common, but not commonly used. Just ask me why in the chat box. Just ask me why in the chat box. Come on. Just ask me why in the chat box. अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, just why in a comment box. One thing we need to understand here कि for all of us, especially human beings, we are actually trapped with something called as an ego. And when that ego comes out, intelligence goes up and then emotions go down, right? Emotions go up and then intelligence go down. आपकी सोचने की विचार शक्ति पूरी बंद हो जाती है। आज जैसे ही विचार शक्ति बंद हो जाती है, आप बोलते हैं कि यार मेरे को तो सब कुछ मालूम है, आई नो दैट। ये इस चक्कर में हम लोग घूम जाते हैं, जैसे आई नो दैट कहा जाता है, आई नो एवरीथिंग, देन you fail to do it. Right? And that is why masterminding is very important. See, masterminding करते समय हमको करना क्या चाहिए? I'll just refer a book here कि ये पावर है ऑर्गेनाइज नॉलेज का, ये पावर है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस का, एंड ये पावर है आपका एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च का।
ये पावर का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको बिजनेस करना है या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमारे साथ आप काम करते हो, जो हम लोग एक साथ काम करते हो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, सो यू आर एक्चुअली लेवरेजिंग ऑन द पावर ऑफ नॉलेज विच आई हैव, राइट? Whatever experiences I have gone through it, accumulated experiences what I've gone through it, that knowledge you got it. You have we have a mastermind called as Wealth Academy. I have with my experience, we have created certain strategies wherein people are earning many percentage of return. So I'll not tell you right now. Anybody in the Wealth Academy right now, just tell me your returns in the chat box. Just your returns. अभी अगर Wealth Academy में अभी हो, और I saw Shashank, right? Shashank Srivastava. Shashank, just tell me कि एवरेज कोई भी स्टॉक का आपका रिटर्न्स कितना हो जाता है? Just tell me in the chat box. Shashank Srivastava साहब, tell me in the chat box. Right? What we need to understand is कि Usha Martin, with that particular Wealth Academy mastermind, he's been able to achieve 143% in one stock. There are many stocks where we have achieved 90%, 100%, 70%, 55%. Yeah, it's a common it's a common knowledge, right? It's a common thought process. That's a mastermind where we learn on passive income. The mastermind we learn on stock market. There's a mastermind we learn on how to select the stocks. It's not that I am teaching. I teach them, but many a times all these my mastermind community people come up with the powerful stocks, and then that's useful for everybody. And that is where the real leverage comes in. The real leverage comes, there's a power of money, right? अगर पावर ऑफ मनी चाहिए तो मास्टरमाइंडिंग के बारे में आपको क्लियर कट करना, थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा. सो लेट मी टेक यू थ्रू अ प्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं है, but will help me to take you through a questions, right? As usual, I'm on mission to elevate the financial literacy of individuals. ये financial literacy, it's not just about 1 + 1 = 2 or 11, whatever it is. जो भी वो financial success है, उसके पीछे जो context create करना है ना, वो context क्या है, वो important है. Because everybody makes money, but people very rarely become financially successful because the context is not right. That's why I'm on a mission to elevate the financial literacy of individuals. So what is Mastermind Group? We have gone through this. As a group of focus, special energy on your efforts in the form of knowledge, resources, and spiritual energy. Because वो जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड वो आपकी एनर्जी को, आपके नॉलेज को, आपके एफर्ट्स को एक बढ़ावा देने के लिए होता है, ना कि पीछे खींचने के लिए. That's a mastermind group, and that mastermind group is helpful to take your life to a next level. I repeat, helpful to take your life to a next level, right? So tell me, how many of you have your own mastermind, or how many of you would love to be in such kind of a mastermind? Just type me in the chat box. Just type me in the chat box. Is my question clear, my dear friends? Right? How many of you are there in the mastermind or would like to be in kind of any kind of a mastermind? Just type me in the chat box. Thank you so much. कोई भी mastermind आपका बन सकता है. ऐसा नहीं कि आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा. I'll tell you very clearly. I'm going to give you आपका mastermind group कैसे बनाने का, उसका मैं step by step आपको कुछ देने वाला हूँ अभी. Be very much attentive here right now. Why I'm telling you this? Because हर एक आदमी का प्रॉब्लम अलग होता है, हर एक आदमी का करंट सिचुएशन अलग होता है, हर एक आदमी का जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, अलग होता है. कोई फैमिली प्रॉब्लम के लिए फंसा हुआ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी का बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी का फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम है. सो जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना. अगर बिजनेस मुझे आज मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, तभी मुझे मास्टरमाइंड चाहिए. और मेरी हेल्थ डिटीरियोरेटेड है तो मुझे अच्छी हेल्थ करनी है, तभी मुझे मास्टरमाइंड चाहिए. अगर मैं मान लीजिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तभी मुझे मास्टरमाइंड चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा 6, not more than that. Right? So how many of you want to assemble your own mastermind? Just type I in the chat box. I'm going to give you a step-by-step process to it. How many of you
want to create your own mastermind. आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप देख लीजिए, because you don't have to tell me here. You have to tell me here. See, one thing we need to understand here very, very carefully is that अगर आपको मास्टरमाइंड बनाना है तो आपको ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जिनको आप आपके लाइफ में आना चाहते हो, राइट? आना चाहते हो, यानी कि अगर मैं किसी को अगर मेरा मास्टरमाइंड चुनना चाहूंगा तो मैं हमेशा द फर्स्ट नेम कम्स इन ब्लेयर सिंगर, द सेकंड नेम कम्स इन रॉबर्ट कियोसाकी, थर्ड नेम कम्स इन हमारे जितने भी कम्युनिटी के कुछ कुछ लोग है ना, जगदीश भगत है या फिर केदार है या फिर बॉबी है, इतने भी सारे लोग हैं जो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोल्हापुर की बात करता हूँ तो दिलीप है, या फिर और यहाँ पे करता हूँ तो आनंद है। सब जितने भी सारे लोग हैं जो लोग हमेशा they are in a good terms with you and I want them into my life. I want to actually do this. अगर कुछ ऑफिस वर्क है तो आई नीड उज्ज्वला इनटू मास्टरमाइंड, बिकॉज दैट इज द पॉइंट वेयर शी इज बीन एक्सेलिंग देयर। फाइनेंशियल प्लानिंग इज आनंद इज एक्सेलिंग देयर। अगर रियल एस्टेट का कुछ करना है तो दिलीप इज एक्सेलिंग देयर। दे आर मच मोर बेटर देन मी as far as their thought process is concerned, so I want them. और यहाँ तक सीमित नहीं रखता। When we talk about improving the system, I want Sagar into the team because Sagar knows much more better than who I am right now on as far as the technical part is concerned. तो एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों कि मास्टरमाइंड करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। If you got this, just type got it in the chat box. If you got this, just have got it in the chat box. Come on. Got it in the chat box, right? Well, you need to drill your mind very, very clearly. The first and the foremost and the important point what you need to understand is कि why do you need an help? पहले असेस करना पड़ेगा कि यार मुझे हेल्प क्यों चाहिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हो और प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो you can solve this problem easily or difficult. Type your answer in the chat box. You can solve this problem easily or difficult. Just type your answer in the chat box. You are here and the problem is here, right? Easy, right? Easy. Great. Thank you. Now, you are here and the problem is here. Then this problem seems to be difficult or easy. You are here and the problem is here. Your problem sounds to be difficult or easy. Come on, type your answer in the chat box. Right? If you're watching on YouTube, type your answer in the comment box. Right? Difficult. More efforts are required. Right? So you you need to take efforts from rising yourself from here to here, or take somebody else's help who is already here. Right? Who is already here. So you actually get in touch with him and learn from him so that this problem becomes very, very, very easy for you. So one thing you need to understand, point number one, choose people who you want to be in your community. And second one, choose a person who is at least one level above you. At least one level above you. 2 पॉइंट मैंने बता दिए। मैं तो हमेशा मेरी टीम को बोलता हूं, आई ऑलवेज वांट टू बी अ डम्बेस्ट पर्सन इन माय एंटायर कंपनी। जितने भी सारे लोग आते हैं मेरे से बहुत होशियार, टैलेंटेड, चाणाक्ष होने बहुत जरूरी है। Because if they are not better than me, then I have to actually संभाल them, right? मुझे उनको संभालना पड़ेगा। Now अगर मान लीजिए they are much more better than me, they are able to take the decisions, they have that capability to take a decision, so I can counter on them, I can look at them for help, to that I also improve, a company also improves a lot. So second thing is that कि अगर मान लीजिए आपको, ये तो मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, हमारे कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं अगर मास्टरमाइंड करना है तो एक्सटर्नल आदमी होता है, एंड एक्सटर्नल आदमी आपको देखना है, राइट? अगर मान लीजिए मुझे यूट्यूब सीखना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे हूँ यूट्यूब में, कोई लोग यहाँ पे है ना, अगर मुझे यूट्यूब सीखना है, कंटेंट बिल्डिंग सीखना है, तो मुझे इनके साथ दोस्ती करना पड़ेगा। उनको इधर मैं यहाँ पे जाऊं और उनको थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे मेरे साथ आने के लिए बैठूं, ताकि हम लोग एक साथ एक दूसरे को एक लेवल पे आके सीख सके। एंड एज फार एज मैंने आज तक जितना भी देखा है, जो भी लोग सही मायने में दे आर एट एन अपर लेवल, they are always ready to help.
वो अभी कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार मैं तुमको कैसे दूंगा, तुमको दिया तो मेरा 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 ज्ञान कम हो जाएगा। नो नो, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, राइट? दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सो मैंने तीन चीजें मैंने आपको बोली कि अगर आपको मास्टरमाइंड बनाना है तो ऐसे ही लोगों को लकली ऐसे ही लोगों को साथ में ले लीजिए जिनसे आप अच्छे बन सकते हो, राइट? और वो जो आदमी है वो आपसे बेहतर होना जरूरी है। और तीसरा चीज मैंने बोला कि जो सही में बेहतर आदमी है वो हमेशा ही इज अ पर्सन हु इज कंसिस्टेंटली वांटिंग टू हेल्प somebody else. If you have this all three very clear, just a numerical 3 in the chat box. If you have all these three clear, just have numerical 3 in the chat box. Everybody, numerical 3 in the chat box. Right. Thank you. Thank you. Thank you. So again, I'll reiterate. वो जो आपके मास्टरमाइंड में अमिताभ बच्चन नहीं होना चाहिए, या फिर बिल गेट्स नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा धांसू आदमी नहीं होना चाहिए. Any person who is better than you and you are comfortable with him to discuss a lot and find out a solution from him, learn from him, he can be your mastermind. He can be your mastermind. So one thing we need to understand very, very, very clearly is, right? आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या गोल हो, प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, अभी मैं अगर मास्टरमाइंड की ग्रोथ की बात करते हैं. अगर आपको मान लीजिए कोई भी आपकी कोई भी गोल हो, या फिर आपको नेक्स्ट लेवल तक बिजनेस लेके जाना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे ग्रो करने हैं, स्टॉक मार्केट सीखना है, पैसिव इनकम सीखना है, या फिर आपका कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर करना है, जो भी है वो स्पेसिफिकली डिफाइन कर लीजिए. वो स्पेसिफिकली डिफाइन कर लीजिए, बिकॉज if you have too many goals and then you create a mastermind for that, then the entire purpose of that particular mastermind gets haywire. Like for example, Financial Fitness Academy is also a sort of a mastermind wherein we discuss a lot on one to many basis. What is the psychology? How do you make money? How do you manage your money? We always say, what are your habits, right? What are the things? Business empowerment is more focused on developing a business. So Wealth Academy is more focused on making more money through stock market and making more money through passive income. So these three steps are very keeping the money, growing the money, and making more money. Keeping the money is it's all about जो भी आपके पास पैसे आते हैं वो कैसे इस्तेमाल करना है. That's keeping the money. Financial Fitness Academy, clear cut mastermind. ग्रोइंग द मनी, जो भी आपके पास पैसे आते हैं, बचाए हैं, सॉलिड रॉक बेड ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए ऐसा कौन सा स्टॉक मार्केट का स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में बात करते हैं. एंड देन ऑल्सो दैट्स अ पैसिव इनकम थ्रू स्ट्रीम. एंड देन जो भी 12 स्टेप ऐसे हैं वो हम लोग वेल्थ एकेडमी में लेते हैं कि जाके आप आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाए. Another business empowerment is we talk about completely about business and thought process, belief systems and everything, right? So what we need to understand here is कि अगर हमको मास्टरमाइंड बनाना है तो तीन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा गोपीनाथ जी. One is you need to find out people who you want to be in your mastermind. Point number one. Point number two, all those people has to be better than you, not lower than you. I want to be the dumbest person in my entire team. Everybody must be better than me so that I learn from them and they are independently enough to take care of all the decisions in their life. And third one is drill it here. Whoever is really successful, I repeat, whoever is really successful is always ready to help. Always ready to help. Right? So how many of you now want to start assembling your own mastermind group? Just type me in the chat box. This 5 minutes exercise will force you to think in a little bit way. Think in a little bit way. Right. So everybody, write your answer. Open your notebook. अगर आपने लिया है तो open your notebook and write a first question. जिस चीज के लिए भी आप मास्टरमाइंड बनाना चाहते हो वो पर्सनल गोल क्या है वो लिख लीजिए उसके ऊपर, सबसे ऊपर.
कि योर पर्सनल गोल फॉर प्लानिंग दिस ग्रुप। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूंगा तो मुझे मेरा डिजिटल बैकएंड सिस्टम है ना वो ऑटोमेटेड करना है, या फिर आई जस्ट वांटेड टू गो इन फॉर अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, राइट? इज माय वॉइस लाउड एंड क्लियर? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इज माय वॉइस लाउड एंड क्लियर? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। Right. So Rashmi, please check your side. Check your side. Check your side. I'm on a microphone, so actually there should not be any problem. Okay. Okay. It's a traductor available. What do you mean by that? I don't know. Olivia. I don't know. Okay. So write down your personal goal for planning this group. जो भी आपका ग्रुप है, जैसे मान लीजिए मैं मेरा बैकएंड एकदम तगड़ा करना चाहता हूँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या चाहिए? that is there in my mind, right? So we got some vendors, we got some softwares, we discussed 1 meeting, 2 meeting, 3 meeting, 4 meeting, called on Sagar, called on Shailesh. We had that discussion. We came down to a conclusion. Yes, we can do this. We should not do this. We can do this. We should not go do this. So my personal goal for planning that group was to create a strong backend system for financial fitness. And the moment I decided, my mind was consistently searching for people who has already done in this. Consistently. 24 घंटा मेरे दिमाग में यही होता था कि यार सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कैसे लेके जाओ, यहां से पेमेंट कलेक्शन कैसे करूं, मैं लोगों को डायरेक्टली अगर आज पैसे दे दिए तो डायरेक्टली एक्सेस कैसे दे दूं, अगर मान लीजिए किसी ने पैसे नहीं दिए, सब्सक्रिप्शन बेस कैंसिल कर दिया, तो वहां से लोगों को मैं कैसे बाहर निकालूं, वहां पे एक्सेस कैसे? वो 24 घंटा मेरे दिमाग में था. दैट वाज द प्रॉब्लम. एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल, and then 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, and then we created a group, and then we started understanding about how have the captions available. I don't know what, no, captions are not available. I'm just talking right now. This is might be during the recording time. Olivia, I really don't know about this, right? So if you want it, I can speak consistently in English. So what you can do is your purpose of creating the mastermind clear in your mind? Just type clear ka C in the chat box. Clear ka C in the chat box. Is your purpose very clear of why you want to create that mastermind? Just type purpose ka clear ka C in the chat box. Now, normally size of the mastermind should be not more than 4 to 5, 5 to 6. Size of mastermind usse zyada nahi hona chahiye, otherwise that becomes a chaos. So write down, you know your personal goal, right? You know your personal goal. Now write down minimum 6 or 7 or 8 or 10 people whom you want them to be part of your mastermind. क्विकली आपके दिमाग में जो भी आता है आप लिखना चालू करो. जो भी दिमाग में आता है आप लिखना चालू कर दो कि वो आपके मास्टरमाइंड में होना बहुत जरूरी है. ही शुड बी इन योर मास्टरमाइंड. Type just write scribble down your names fast, and the moment you complete that, just type yes in the chat box or done in the chat box. Once you complete that, just type done in the chat box. Rashmi, you're fast. Thank you. Thank you. Come on. Keep writing. Because this is very important exercise. Because now you are trying to create an access to the people who have a knowledge which can give a booster to your efforts. Thank you, Sujata. Means you're actually accessing the people, right? Access is the key. Access is the key. One thing you need to understand very clearly is that there is no poor person on this earth. I repeat, there is no poor person on this earth, because all poor person do not have access to the resources. That's the only problem. All these poor people does not have an access to the resources. That's the main problem. If they would have had an access to the resources, they would have been doing. They would have been also doing the same thing what other people are doing, right? But उसको उनके पास access नहीं था. जिनके पास access होता है, they convert that everything. If you're done with this, all 5, 6, 10 people's name, just type done in the chat box. I want each one of you to write it down. Each one of you to write it down. Come on, just type done in the chat box.
Come on, just type down in the chat box. Very, very, very important, my dear friend. Very, very, very important. Now, I'll not go into detail कि उनसे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है. But I'll tell you one thing very, very clearly कि it's very important for you to create your script in your mind. Very, very clear cut script in your mind. Because then only अभी जो भी आपने नाम लिखे हैं, वो नाम आपके पास आ जाएंगे. Right? For example, आप जैसे अगर मैं मेरा मास्टरमाइंड बनाना चाहता हूं तो मैं हमेशा बोलूंगा कि हाय शशांक जी, हाय शशांक जी, दिस इज सुधीर खोत हियर फ्रॉम फाइनेंशियल फिटनेस. हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, राइट सर? शशांक जी, आप तो सॉफ्टवेयर में, राइट? आप सॉफ्टवेयर में हैं और मैं एक बैकएंड का सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, और ये बैकएंड का सिस्टम अभी क्रिएट करना चालू कर दिया मैंने. एंड आई जस्ट वांट टू नो कनेक्ट विथ यू so that I get some knowledge. और जो भी मैं कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं. तो would you like to be part of my group? We will complete this tasks in 2 or 3 months. और 2-3 महीने में there will be a lot of fun interaction. Everybody type in the chat box, would you be like to be part of my group? Just type yes in the chat box. Would you be like to be part of my group? Just type yes in the chat box. So this is the simple way, right? Simple way. So accordingly आप आपका स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दीजिए. That वो स्क्रिप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्क्रिप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? लेट मी टेक यू थ्रू दिस स्लाइड हियर. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? व्हाट इज मास्टरमाइंड, हाउ टू असेंबल द मास्टरमाइंड ग्रुप. इसके बारे में हम लोगों ने बात कर दिया अभी, राइट? कि आप जो 5, 6, 7 लोगों का जो कोर मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएंगे, उनको असेंबल कैसे करना है वो गॉन थ्रू. आइडियल साइज क्या है? इट्स 4 to 5, 5 to 6, मैक्सिमम 7, राइट? मैंने आपको बोला कि राइट योर ओन स्क्रिप्ट, बिकॉज आपका प्रॉब्लम है आपको मालूम. Because if you are able to relate that problem and ask a specific question to the person who is better than you, then he will be able to be with you and solve your problems. The problem with many people is that when they have a problem, they don't talk to anybody. They just want everything to be resolved by them. मैं अमिताभ बच्चन, मैं ये सब कुछ, मैं ही सब कुछ काम करूंगा, मैं ही री इन्वेंट करूंगा, आई विल डू इट एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ. ऐसा नहीं होता. Then there are many people who have done that. There's no point in reinventing the wheel. There's no point in doing research. Research is research. जो भी सर्च हुआ है उसको research करो, right? And that is where it's a mastermind plays a very, very important role. My way of thinking, right? My way of thinking, it's all about we coming together. It's not bossing, it's about understanding, creating a win-win business model, leveraging each other's strength, leveraging each other's thought process, understanding what is your feeling, what is your angle, what is my angle, and then collectively we take a decision that we move on to the next step. Is everybody clear till here? Just type clear in the chat box. See, masterminding is very, very, very simple. But people make it very, very, very difficult because ego comes into picture. Everybody want to rule the group, and masterminding is not about ruling the group. It's all about you understanding the power of that. यहाँ पे कहीं लिखा है, मैं मिल नहीं रहा मुझे. Just gone through it. One second. यहाँ पे क्या लिखा है? It's all about the power of money, right? जो मनी, पैसे की जो बात है ना, पैसे की बात है, वो अगर पाना है तो नेक्स्ट लेवल तक जाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मास्टरमाइंडिंग. यहाँ पे लिखा है एनीबडी कैन विश फॉर रिचेस. मैं थिंक एंड ग्रो रिच किताब की बात कर रहा हूँ. एनीबडी कैन विश फॉर रिचेस. मोस्ट पीपल डू, राइट? बट ओनली फ्यू पीपल नो दैट एंड देयर इज अ डेफिनेट प्लान. Only few people know there's a definite plan. Plus a burning desire for wealth. Once you know that there's a definitive plan and when you have a burning desire to achieve that, आपको wealthy बनने से कोई नहीं रोक सकता. That's the सारांश है इसका, right? So अगर मान लीजिए मेरे पास definitive plan masterminding का बना दिया मैंने और उसके ऊपर मैंने काम करना चालू कर दिया, मेरा तो क्लियर कट थॉट प्रोसेस है यार, अगले साल मुझे 50% ग्रोथ चाहिए. अगले साल मेरी तनख्वाह अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की, मुझे 1.5 लाख करना है.
इस साल, पिछले साल में एमडीआरटी नहीं बना तो इस साल मुझे एमडीआरटी बनना है, सीओटी बनना है, टीओटी बनना है। अगर मान लीजिए लास्ट टाइम मैंने 25 लाख कमाए थे, इस बार मुझे 50 लाख कमाए। आई नीड टू हैव दैट डेफिनेटिव प्लान। देन द मास्टरमाइंड स्टार्ट्स शेपिंग इट। मास्टरमाइंडिंग कंडक्ट करने का भी कुछ नियम होते हैं, कंडक्ट करने के नियम होते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। आप जो भी मास्टरमाइंड डिफाइन करेंगे तो उसको कंडक्ट करने का तरीका कैसा है। कंडक्टिंग अ मास्टरमाइंड मीटिंग, आपके नोटबुक में लिखो, कंडक्टिंग अ मास्टरमाइंड मीटिंग। See, it all starts with a divine, it starts with you understanding with each other. You start with everybody is there on a common platform. I'll tell you, I am a level 1 certified of Blair Singer Training Academy, and we have a mastermind every month. Or whenever, in fact, whenever we meet uh, for any kind of an event, I am crewing somewhere, or we are just casually meeting for a small meeting, right? On Zoom or on personal, we always start with one sentence. We always start with one sentence like, what do you feel like saying? Means what? Okay, you are here right now. What do you feel like saying right now? Like, for example, if you ask me, what do you feel like saying? Oh, yes, thank you so much for giving me this opportunity. What I feel like saying is that I am very, very, very proud that I've read this book called as Think and Grow Rich. This book has changed my life. The goal sheets, whatever I have done all the way back 10 years back, have been fulfilled in my life. The chapter masterminding, which I've gone through in my life, have done a lot of masterminds knowingly, unknowingly, because once you have that knowledge in the subconscious mind, knowingly or unknowingly, keep on doing this. I'm very, very, very happy, thankful to this particular book, and I just want to share this masterminding with you all. That's what I feel like saying. Now, once we start this mastermind in such a way, so then I pass on to somebody else. Okay, great, thank you. So Aniruddha, what do you feel like saying? Then Aniruddha says, thank you, Sudhir. What I feel like saying is that Sudhir, हमेशा हम आपकी क्लास में आते हैं, and I always learn something else extra. I always learn something else extra, and next day I'm implementing in my life, and I'm getting very, very good results. Thank you, Sudhir, for all your knowledge. That's what I feel like saying. Now pass on to, yes, Bharat, what do you feel like saying? Bharat will say, thank you so much. Thank you, Aniruddha, for giving me this opportunity. And what I feel like saying is that blah, 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 blah. Then what I feel like saying, blah, 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 blah. So now what happens है, आप मास्टरमाइंड में चलो चलो आज क्या बात करना है, आज क्या बात कर, चलो आज इसके बारे में बात करें, चलो पैसा कैसे ग्रो होना, ऐसे से नहीं होता. देन द एंटायर कम्युनिटी का वाइब गेट डिस्टर्ब. Now if you start with this particular session, what do you feel like saying? What happens is that everybody comes in on a same platform. कोई मर्सिडीज बेंज से आ गया या बस से आ गया, टू व्हीलर पे आ गया. Now everybody comes on a same platform. If you agree on this particular point, just type same in the chat box. If you agree with on this, just type same in the chat box. Right. Thank you. Now, then let's start with the second point. What's the good news? What's bad news? Just start understanding that. Yeah, last week was very good. Sales was very good. But I lost a couple of orders. Health was not good. That's bad. Good and bad. Then third one, be on time. Negotiate the time. अगर मान लीजिए if you specifically अगर 6 लोग हैं तो हर एक आदमी को 10 मिनट का टाइम दीजिए. कीप वॉच, कीप अ टाइमर, बिकॉज नॉर्मली एक मीटिंग चालू होता है तो लिंगरिंग चलता है 2-2, 3-3 घंटे तक एंड विदाउट एनी आउटपुट. सो स्टॉप वॉच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10 मिनट का टाइम देके आप 10 मिनट में खत्म करके देन बाद में आप एज ए लीडर कंक्लूड कर सकते हो. राइट. जब कोई आदमी बात करता है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लिसन टू हिम वेरी वेरी केयरफुली. आराम के साथ सुनो उसको क्या कहना है. अदरवाइज इफ यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन बिटवीन, तो जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट तो आगे आता ही नहीं है. आई रिपीट, द मेन पॉइंट वो आगे आता ही नहीं है. एंड जस्ट बिकॉज द मेन पॉइंट आता नहीं है, everything goes गोल 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 चक्कर. So make sure you
give a specific time, and when somebody is talking, be listen to it, and then the brainstorm your idea, right? Then the brainstorm the idea. And अगर मान लीजिए कोई आता है तो make a commitment to stretch little bit more. 60 मिनट की टाइम है तो 70 मिनट हो सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो सकता है. And then end with a gratitude. Thank you so much for being here. I always say it. Everybody, thank you so much for being here. Today at 8 o'clock, you would have been doing something else in your life, right? You would have been watching Netflix, you would have been watching with a family. आप कुछ अलग कर सकते थे. You managed to stay here. Thank you so much for being your time. Gratitude, right? At the end, I always say that thank you everybody. जितने भी लोग बचे हैं रूम में, thank you everybody. Thank you so much for being here. I hope I was able to add value to you as far as the mastermind is concerned. So end everything with a gratitude. So let me give you 6 tips again. First, start with an invocation. Like understand कि you have to get everybody on the same floor. किसी का बीवी के साथ झगड़ा हो गया होगा, किसी का कोई बारिश में भीग गया होगा, कोई बहुत हैप्पी होगा, कोई एवरेज होगा. So everybody has to be on the same platform. Make sure you share your wins and जो भी है. Then good news and bad news to share, ताकि everybody again come, यार मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, इसके लाइफ में प्रॉब्लम है. Okay, so I'm there on that particular thing. And then be specific on time, right? प्लान, वो अगर मान लीजिए कोई पूछने वाला है, बताने वाला है, तो उसको 100% सुनो, then commitment करो, and then make sure you end up everything with a gratitude. How many of you feel if you do this in a specific way, you will have a next level mastermind group which will help you to take your any problem to a solving stage? Just type me in the chat box. Just type me. I'm very strong believer in that because I'm doing this day in, day out. छोटी सी छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए I create unknowingly masterminds. उसको mastermind नाम अभी देते हैं, लेकिन unknowingly मैं हमेशा करते रहता हूँ. And that is what has been very useful for me, helpful for me for next अभी तक जितने भी मेरे लाइफ में, right? अभी तक जितना भी मेरा चल रहा था उसके लाइफ में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. देन जो भी चैलेंजेस है ग्रुप में शेयर कर लीजिए, एक साथ आप लिख लीजिए. देन मेक श्योर यू जितने भी सजेशंस ग्रुप में आ गए हैं वो एक साथ लिख लीजिए. जो कॉन्टैक्ट रिसोर्सेस आए हैं, कॉन्टैक्ट रिसोर्सेस आप लिख लीजिए. एंड देन मेक श्योर यू डोंट close that mastermind, weekly mastermind, whatever it is, a monthly mastermind, without defining a proper action plan. This is very, 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 very important. If you don't create a clear call to action, then the entire meeting a purpose go waste. If you don't create a clear 100% call to action, the entire purpose of meeting gets deviated. Anybody have any question? Let me know so that I'll answer this question. या Q&A में आप लिख सकते हैं. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डिफिकल्टी है, make sure you ask me into Q&A right now. I have something more to share with you. There's one mastermind I have already created. How many of you would love to be part of that mastermind so that आपकी wealth की growth बहुत अच्छी होगी? Just type I in the chat box. How many of you would love to be a part of my mastermind? My mastermind. Thank you. There are few people who are already part of that particular mastermind. They are reaping benefit. I just wanted to share that mastermind with you. Is it okay if I share that with you? Would you like to know what exactly that mastermind is all about? Just type okay in the chat box, or PG, permission granted, in the chat box. PG, permission granted, in the chat box. Right? Thank you. So let me open this. We conducted mastermind, broader mastermind group, a financial fitness club. Now, this is one thing which I have done long back. Means before COVID, this one mastermind was already working for all the people, who have completed financial fitness intensive.
If you see the logo of this particular financial fitness club, it's a brain coming together and then people coming together. वहां पे एग्रीकल्चर भी है तो एग्रीकल्चर भी है, वो सब कुछ करके हम लोगों ने क्लब बनाया था. That club still exists, but this is not a mastermind group. This is the overall core mastermind group. वहां पे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं हम लोग एक साथ काम करते हैं, राइट. You know that कि there is something called as financial fitness. I repeat, financial fitness with me because my company name is Financial Fitness. How many of you really feel that you being associated with financial fitness have helped you to take your life to little extra level, extra high level? Just type yes in the chat box. Yes in the chat box. अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल फिटनेस की वजह से आपका लाइफ थोड़ा बहुत भी ऊपर गया है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. Right. So just to brief you about it, it's all about Silver Academy because I strongly believe that किसी को भी अगर पैसे के प्रति काम करना है, लाइफ में ग्रोथ के प्रति काम करना है, तो you have to work on 3 different areas of your life. One is keeping the money, because आपके लाइफ में आप जो भी काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, आपके लाइफ में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज टू मैनेज द मनी. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच यू हैव इन योर हैंड. नाउ इफ यू स्टार्ट मैनेजिंग द मनी वेल, I always say it's not about how much money you make, it's all about how well you manage your money. Once you start managing that money well, then you start creating a solid rock bed of investment. Then actually you'll need a growing the money. ग्रोइंग, जो पैसे अगर नहीं है आपके पास तो ग्रो क्या करेंगे? Because unless if you want to invest into stock market, you must have money to earn, invest that, right? If you want to invest into real estate, you must have money to invest there. So that's why Financial Fitness Academy is the first mastermind group. वहां पे आपको पैसे कैसे मैनेज करना है, पैसे के प्रति सब कुछ सीखना है. Then we have a growing money, which is gold level, which is Wealth Academy, and this is business empowerment, which is you taking your life to a next level. यहाँ पे this is a very 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 selective, very high value mastermind. वहां पे हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए क्या करना है बात करते हैं. छोटी छोटी चीजें इतनी पावरफुल हो जाती है. कितने सारे तो लोगों ने यहाँ पे एक टेक्निक यूज करके 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का ऑर्डर डील क्रैक किया है. So this is all about financial fitness. ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल फिटनेस है, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल फिटनेस है. Now today I'm going to share with you a mastermind which is called as Wealth Academy. Do I have a permission to talk about this gold level Wealth Academy, which is a mastermind to help you to grow your money to a next level and help you to build a great passive income streams? Do I have a permission to share this with you? Just type yes in the chat box. Just type yes in the chat box. I'll be giving you practical things. I'll show you the practical results. I repeat, I'll show you the practical results that will take your life to a completely next level. See, Wealth Academy is a journey between you and me, a specific community of people. वहां पे मैं 2 चीजें आपको सिखा दूंगा. यहाँ पे मास्टरमाइंड को थोड़ा सा मैंने ट्विक कर दिया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिखा दूंगा, सिखाने के बाद देन यू इम्प्लीमेंट इट, देन वी डिस्कस इट. मैं आपको सिखा दूंगा, देन यू इम्प्लीमेंट इट एंड देन वी डिस्कस इट. मैंने मेरे लाइफ में करीबन 8 से 10 लाख रुपए निवेश किए थे फ्यूचर ऑप्शंस को सीखने के लिए, या एफएनओ को सीखने के लिए मैंने करीबन 8 से 10 लाख रुपए का निवेश किया था. जैसे ही मैं सिंगापुर से वापस आ गया कर्टिस स्मिथ जी का प्रोग्राम करके, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ना मैं रियलाइज कि अभी तो कल से मार्केट को तोड़ फोड़ कर दूंगा मैं. लेकिन द रियलिटी वाज कंप्लीट डिफरेंट. आई वाज नॉट एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. वो तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, वो समझा ही नहीं मेरे को क्या कैसे करना है. आई वाज नॉट मेड फॉर दैट. बट फ्रॉम द नॉलेज आई क्रिएटेड अ 1% स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी. 1% स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी जो हर मंगलवार, ये अभी थोड़ा सा टाइमिंग चेंज होने वाला है, सैटरडे संडे को होने वाला है, अगले हफ्ते भी उसके बारे में बता दूंगा मैं. विल मीट अ लाइव ऑन जूम. मैं आपको ये सब कुछ सिखा दूंगा. हर मंगलवार, हर सोमवार के दिन एक पैसिव इनकम स्ट्रीम कैसे जनरेट करना है उसके बारे में मास्टरमाइंड करेंगे. एक पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट करना है. वो 3 महीने के प्रोग्राम में
आपके लाइफ में एक तो पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट होना ही चाहिए, वैसे मेरा प्रयास है। होगा कि नहीं होगा, आपके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड होता है। वेल्थ एकेडमी इज ऑल अबाउट ग्रोइंग द मनी, completely growing the money, completely growing the money. So just one second, growing the money. So wealth academy is 1% stock market strategy. एक चीज की मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। गारंटी क्यों देता हूँ? बिकॉज मैं आपको अभी फिगर्स दिखाने वाला हूँ, राइट? अगर ये आपने 1% स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी सीख लिया प्रॉपरली, तो आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे ये मास्टरमाइंड में आने के लिए, वो पूरे के पूरे पैसे आपके गारंटेड रिकवर होंगे थ्रू योर इन्वेस्टमेंट। दैट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड. So how many of you would love to be part of this mastermind? Just type me in the chat box. Just type me in the chat box. I'll share the details with you. Just type me in the chat box. How many of you would love to be part of this particular mastermind? Just type me in the chat box. Type me in the chat box. So what I'm going to give you right now here is, यहाँ पे I cannot take everybody, लेकिन I just wanted to understand कि आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है, आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है। मैं यहाँ पे आपको एक लिंक भेज रहा हूँ अभी। मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट लिंक, आपका नाम फिलअप करें, फॉर्म सबमिट करें, एंड वंस यू सबमिट दैट पर्टिकुलर फॉर्म, जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स. Once you submit that particular form, just type done in the chat box. Once you submit that particular form, just type done in the chat box. Right? Submit that particular form, just type done in the chat box, everybody. Okay, assuming that आपने कर दिया है, let me continue with this particular situation, continue with the presentation right now. Okay, so see, this Wealth Academy is all about 1% stock market strategy and passive income stream. अभी 1% स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी है क्या, मैं आपको बता दूंगा। ये वेल्थ एकेडमी मास्टरमाइंड क्या है, मैं आपको बता दूंगा। 3 महीने का जर्नी है। टोटल 12 लाइव सेशंस ऑन पैसिव इनकम होंगे। टोटल 12 लाइव सेशंस ऑन पैसिव इनकम होंगे। हर एक सेशन होगा 90 मिनट से लेकर 120 मिनट तक का। ये हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मास्टरी, लाइफ मास्टरी और पैसिव इनकम मास्टरी, 3 एरियाज के ऊपर काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट मास्टरी इज 1% स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी. लाइफ मास्टरी इज all the learnings from Mr. Robin Sharma I've clubbed down into some video part and given it to you. And then passive income mastery is 12 sessions, right? ये कुछ सर्कुलर आया था स्टॉक मार्केट के प्रति लोगों का कि 10 में से 9 लोग तो पैसा लूज करते हैं एफएनओ में, और एवरेज आदमी करीबन 50,000 के आसपास नुकसान करता ही है। 50,000 ट्रेडिंग लॉस होता है। अगर प्रॉफिट भी बनाता है तो 15 से 50% प्रॉफिट वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाता है। टेलिंग द स्टोरी इज कि व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग बिग मनी इन स्टॉक मार्केट, इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉट ऑफ मनी इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और एवरेज 10 में से 9 लोग तो पैसा वेस्ट ही करते हैं। बिकॉज वहां पे क्या है कि हलचल है, वहां पे एक्साइटमेंट है, वहां पे ऊपर क्या नीचे, ऊपर क्या नीचे, वो एक्साइटमेंट है। वो एक्साइटमेंट में कभी पैसा नहीं मिलते। जब सिस्टम बोरिंग हो तभी पैसे मिलते हैं। सिस्टम बोरिंग हो तभी तो पैसे मिलते हैं। और मैं आपको कंप्लीटली सिस्टम बोरिंग कैसे होता है और बोरिंग सिस्टम से कितने टक्के पैसे कमा सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको बोर होके पैसे कमाने हैं, अच्छे खासे तगड़े पैसे कमाने हैं, जस्ट टाइप बोरिंग इन द चैट बॉक्स। बिकॉज ऐसे ही होता है, बहुत कष्ट करने से पैसे नहीं होता, सिस्टम से पैसा बनता है। और ये सिस्टम हम मास्टरमाइंड में आपको सिखा देंगे। जस्ट टाइप बोरिंग इन द चैट बॉक्स, BORING. थैंक यू सो मच मयूरी, थैंक यू सो मच। बोरिंग इन द चैट बॉक्स। सो लेट मी शेयर विथ यू 1% स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। इज वेरी सिंपल।
I'll give you a clear-cut, crisp formula on which stock to buy, when to buy, how much to buy, and when to exit. और अगर मैंने आपको ये बताया कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है और कब बेचना है, और इसमें मैक्सिमम रिस्क 1,000 रुपए की है पर ट्रेड। ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो गया तो 1,000 रुपया, लेकिन अगर पैसा आ गया तो 70%, 50%, 35%, 15%, 20%, 140%, 143%, जो भी आ सकता है। सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर इस टाइप की स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी, तो अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में निवेश भी नहीं किया होगा, तभी भी आप इसमें निवेश करना पसंद करेंगे? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। if you're not done any kind of investment in stock market, लेकिन अगर ये मैंने बताया which stock to buy, when to buy, how much to buy, when to sell, 1,000 रुपए के रिस्क, तो आप करेंगे? Just type me in the chat box, right? तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा दूंगा। हर महीने में मैं मेरे 4 स्टॉक आपको बस कौन से इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ग्रुप ही हमारा इतना तगड़ा पावरफुल है, ग्रुप ही आपको बता देगा। अभी तक मैं आपको ये स्ट्रैटेजी से कितना रिजल्ट अचीव किया है मैं यहां पे दिखा दूंगा, और मैं एक लाइव स्टेटमेंट के ऊपर भी दिखा दूंगा। पिछले 1.5 साल में हमने जिंदाल स्टेनलेस के ऊपर 90% प्रॉफिट अचीव किया। अगर आपको 90% अच्छा लगता है तो जस्ट टाइप गुड इन द चैट बॉक्स। आदित्य बिरला कैपिटल 33%, एक्साइड इंडस्ट्रीज 37%, ITC 33%, KEI इंडस्ट्रीज 66%, उषा मार्टिन 94%। मैं आपको कुछ यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दूंगा, अभी मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा। ये एक पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो हम दिस इज अ पोर्टफोलियो, राइट? दिस इज अ पोर्टफोलियो हियर। इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ये भी दिखाया है यहाँ पर 90%, 33%, एवरीथिंग इज हियर। आदित्य बिरला 33%, कार्बोरंडम 20%, एक्साइड इंडस्ट्रीज 37%, ये 19%, ITC 33%, everything is green, everything is green. JSL 90.96, 66.24, 13, 19, यहाँ पे देखो 94.25। एक ही स्टॉक मेरा TCS का और ये वेदांता का रेड में है, क्योंकि TCS ज्यादा स्टॉक नहीं है, वेदांता ज्यादा है, लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इसीलिए हमने उसको हाथ नहीं लगाया है। How many of you feel these kind of returns are powerful, and how many of you want to achieve this kind of results? Just type I in the chat box. Just type I in the chat box. कितने लोगों को ये रिजल्ट आपके पास चाहिए? Just type I in the chat box. ये this is not bookish. This is a practical. मैंने आपको डायरेक्टली लाइव आपको दिखाया है कि हमने कितना उधर से पैसे इधर से निकाले, राइट? जो भी रिजल्ट है उधर से हमने यहाँ पे दिखाया आपको। 90% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 90% इज अ टोटल सहाना, नॉट फॉर हाउ मेनी मंथ्स। जिस दिन से हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, दैट्स अ पिरामिडिंग एक्चुअली। some stocks we have bought at Jindal Stainless at 95 rupees also. If we consider 90 rupees ka stock, now 350 rupees is a 300% return. But I'm not talking that. We have consistently investing on. Last week also we invested at 315 rupees. That is also included into it. So last 1.5 year, consistently on the basis of pyramiding, we are investing into this, and these are the results which we have gone in. So it's not just about month. It's a constant. Last week also we have invested in Jindal Stainless, Exide, ITC, KEI, Usha Martin, everywhere. I hope you got it, Shana. Just type yes in the chat box. Right. So, मैंने अभी तक ज़्यादा आय देखा नहीं. How many of you want to achieve these kind of results? Just type I in the chat box. आप में से कितने लोगों को ये result चाहिए? Just type I in the chat box. How many of you learn this in detail? Just type I in the chat box. Right. Right. See, one thing we need to understand, ये जो passive income stream का जो बात है वो क्या है, मैं आपको explain कर दूंगा यहाँ पे. Right. Very very simple. It's a gold membership. Right. Wealth Academy, ये life principles को पकड़ के ये Wealth Academy create किए हैं. The first and the foremost important is we'll be teaching you one investment mastery, which is 1% stock market strategy, then life mastery, then income mastery, and then हर मंडे के दिन
एक नया टॉपिक लेके 12 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, 12 डिफरेंट टॉपिक्स के हम लोग बात करेंगे ना। ऑल दिस 12 डिफरेंट टॉपिक्स विल बी यूजफुल टू टेक योर बिजनेस लाइफ टू नेक्स्ट लेवल, ताकि आप पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट करना चालू करेंगे। passive income. This is a very clearly defined syllabus, and this defined syllabus will help you to understand कि आपके लाइफ में passive income कैसे जनरेट करना चाहते हो। आप में से कितने लोगों को पैसिव इनकम से बहुत प्यार है? जस्ट टाइप PI इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों को पैसिव इनकम जनरेट करना है आपके लाइफ में? जस्ट PI इन द चैट बॉक्स। पैसिव इनकम इज सुकून, पैसिव इनकम इज प्लेजर, पैसिव इनकम यू रिटायरिंग अर्ली, पैसिव इनकम देयर इज नो फोर्स कंपल्शन फॉर यू टू वर्क फॉर मनी। पैसिव इनकम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, बिकॉज पैसिव इनकम अगर नहीं है तो यू विल कीप ऑन वर्किंग फॉर money for rest of your life. So how many of you want to learn the secret or a tactics or a scientific process how to earn, how to generate multiple streams of passive income in your life? Just type me in the chat box. आप में से कितने लोगों को ये multiple streams of passive income generate करना है आपके लाइफ में? Just type me in the chat box. Right? Just type me in the chat box. Just type me in the chat box. Thank you, thank you, thank you. ये लाइफ मास्टरी के बारे में बताया मैंने, वेल्थ एकेडमी के बारे में बताया मैंने, राइट। सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अगर मान लीजिए आपने ये वेल्थ एकेडमी अगर आपने बाय कर लिया तो ऑब्वियसली आपको सिल्वर एकेडमी फ्री मिलेगा। व्हाई? बिकॉज जब तक आप पैसे को मैनेज करना नहीं सीखोगे तब तक आपको ये वेल्थ एकेडमी का कोई फायदा ही नहीं है, आपको कोई फायदा ही नहीं है। और जितने भी लोग फाइनेंशियल फिटनेस एकेडमी में ऑलरेडी है, तो जो भी मैं आपको प्राइस बता दूंगा उसमें से आपको 5,000 कम करना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी देयर इनटू फाइनेंशियल फिटनेस एकेडमी? जस्ट टाइप FFA इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर नॉट इनटू फाइनेंशियल फिटनेस एकेडमी, जस्ट टाइप NO नो इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। प्रशांत घुले साहब, आप फाइनेंशियल फिटनेस इंटेंसिव में थे, not in financial fitness academy, right? Financial, I think, I don't know whether you're there or not, but any which ways. So overall अगर मान लीजिए वेल्थ एकेडमी अगर देखते हैं हम लोग, तो वेल्थ एकेडमी इज प्राइस्ड एट 25,000 रुपीज प्लस GST. How many of you want to be a part of this wealth academy? Just type I in the chat box. करना क्या है आपको? You just have to make sure you submit a payment, book your slot with 4,999 plus GST right now. 4,999 plus GST right now. आपको ये slot book करना है, and then tomorrow, day after tomorrow, my team will discuss you about the balance payment. So, how many of you would love to be a part of this? One second. How many of you would love to be a part of this and take your life to a next level? And how many of you would love to understand what exactly this passive income is all about? Just type, make sure you click on this link and start taking this advantage. Start taking this advantage, right? Start taking this advantage here. Okay, I'll go it here. Okay, go it here. Thank you. So this is all about financial fitness wealth academy, right? तो इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू बुक अ स्लॉट विद 4,999 प्लस GST। टोटल अगर आप फाइनेंशियल फिटनेस एकेडमी में है तो आपको द ट्यूशन विल बी 20,000 प्लस GST, बिकॉज आपने वो 4,999 प्लस GST ऑलरेडी पे कर चुके हैं। वी डोंट वांट टू चार्ज यू डबल। अगर इफ यू आर न्यू, कंप्लीटली न्यू, यू हैव टू पे 4,999 प्लस GST। बाकी का पैसे के लिए माय टीम विल डिस्कस विथ यू ऑन दिस, एंड देन you will be admitted to financial fitness academy also, right? Any questions on this? Any questions? ये तो मैं बताया आपको, right? Any questions on this? Recovery investment, right? Everything is on one concept, which is creating a multiple sources of income. Result is financial freedom. और सबसे important क्या है कि if you are there into this particular community now, the entire is for a lifetime deal. एक बार आपने पैसे भर दिए तो लाइफ टाइम के लिए आप आपके इसमें हो सकते हैं। यस शशांक, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट।
Arindam Sen Gupta Saab, no problem. You can come join whenever you have your money with you. Not a problem, right? So for all of those who are watching me on YouTube, make sure you like, subscribe to my YouTube channel and hit that notification bell, because very shortly I am going to conduct 13 different videos on this book, Think and Grow Rich, which will help you take your personal life, business life, relationship, money, financial, everything to a next level. Thank you so much for watching.